Assalamu alaikum students. Today we are going to solve two numerical questions, two practice problems related to the topic refracting telescope. How to find the magnification of the refracting telescope and how to find the length of the tube of the refracting telescope. Example 12.9. The largest optical refracting telescope in the world is situated in the Yerkes Observatory, Wisconsin. Yerkes Observatory, Wisconsin. Yerkes Observatory, Wisconsin, the objective. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve two numerical questions, two practice problems related to a topic refracting telescope. How to find the magnification of the refracting telescope and how to find the length of the tube of the refracting telescope. So example 12.9. The largest optical refracting telescope in the world is situated in Yerkes Observatory, Wisconsin. The objective has a focal length of 19 meter and eyepiece has a focal length of 10 centimeter. Calculate the total magnifying power, means the magnification of this telescope, and estimate the length of the tube. दो चीज़ों को find out करना है, magnifying power और magnification of this telescope and the length of the tube. तो उसके लिए given data, focal length of objective given है 19 मीटर, focal length of eyepiece 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर के बराबर है, 10 divided by 100. Required is magnification m theta and length of the tube. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर होता है. यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे. माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 19 मीटर डिवाइड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 0.1. जब 19 को हम 0.1 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो m theta इज इक्वल टू माइनस 190. So this is the magnification of this refracting telescope. The minus sign shows that the final image is inverted as compared to the object, and 190 times the image is magnified than the object. 190 times the image is magnified as compared to the object. अब दूसरे स्टेप में ये तो A है. B स्टेप में हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द ट्यूब वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये 19 मीटर के बराबर है, ये 0.1 मीटर के बराबर है. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे. लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू 19 मीटर प्लस 0.1 मीटर. सो द लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी 19.1 मीटर. This will be the length of the tube of the refracting telescope. Assignment 12.9. An astronomical telescope has the following specifications. Focal length of objective is 985 mm and focal length of eyepiece is 5 mm only. Find the angular magnification and the estimated length of the tube. उसी तरह का numerical है जिस तरह हमने example 12.9 में सॉल्व किया. Focal length of objective, focal length of eyepiece given है और हमें मैग्निफिकेशन और लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यहाँ पर फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत है क्योंकि दोनों ही एक तरह के यूनिट्स में है. ये भी मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर में है, तो इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं. हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे m थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. m थीटा इज इक्वल टू माइनस 985 डिवाइडेड बाई 5. वी विल गेट m थीटा इज इक्वल टू minus 197. This is the magnification. The minus sign shows the image is inverted, the final image is inverted, and 197 shows the magnitude of the magnification. B part में हमें find out करना है length of the tube. Length of the tube मैंने आपको बताया focal length of objective plus focal length of eyepiece के बराबर होता है. Focal length of objective 985 mm plus focal length of eyepiece is 5 mm. So the total length of the tube is 990 millimeter. This is the total length of the tube.